Hi everyone. Hope all of you are really good. So हम लोग ये next episode पे पहुंच गए. We are going to our next topic, laws of chemical reaction. So this is guys chemistry for competitions. We are doing physics chemistry and 2.3 we have reached. Sorry for not posting a video so long because I was stuck up somewhere, but now I will try to make the feature more regular. So you're ready for our next class, guys. This is chemistry of for competitions. Typing error, sorry. 2.3 laws of chemical combination. This is what we are going to start today. इससे पहले का whole concept पे काफी अच्छे views आए हैं. I'm very happy. 150 plus, but they should be 1000 at least. Okay, guys. So please share the link with your friends so that we have more and more students joining the channel and we have a tougher competition. Want to do a lot of question practice and tests on the app, and you can find your all India ranking. ठीक है. तो ये मैं आपसे एक्सपेक्ट करती हूँ कि ये आप मेरे लिए करेंगे. आप शेयर करेंगे वीडियोस अपने दोस्तों के साथ और आप ऐप को डाउनलोड करेंगे और आप वीडियो को लाइक करेंगे. दैट इज ओनली लाइक इट. ओके. So I am going on to my next topic, laws of chemical combination. Now, you know what happens? जब elements combine होते हैं, form compounds. ये आप सबको पता है कि elements combine हो रहे हैं और compounds बनाते हैं. और उन elements की combination के लिए केमिस्ट्री में कुछ रूल्स को फॉलो करना पड़ता है. ओके. हर एक एलिमेंट एक दूसरे के साथ कंपैटिबल नहीं होता. नंबर वन. नंबर टू, अगर एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ कंपैटिबल है तो उससे उनकी रेशो प्रॉपर होनी चाहिए एक दूसरे के साथ, और it should follow certain laws, and these laws they are known as laws of chemical combination. तो हम लोग generalizations बोलते हैं जो कि various chemists ने हमको दी है to explain the combination of the elements to form compounds. So that is what we are going to do today. The first law which we are going to discuss is, okay, उससे पहले मैं आपको बता दूं ऐप पे क्या क्या हो रहा है. तो ऐप पे हमारे पास guys we have 11th and 12th के notes. मेरे hand written notes हैं taken from various books and they are in the form of pointers that आपको grasp करने में easy हो. Secondly, NEET का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, NEET 2022 के लिए एक स्पेशल कोर्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री that has been launched, which is live classes है. ये 20th of April को start होने वाली है. This is a 1 month course which we have. पूरा organic chemistry for NEET 2022 we are going to finish. Then we have live classes for 11th and 12th. Have classes 4 days in a week for 11th and 12th. फिर हमारे पास एक for the teachers जिन्होंने गवर्नमेंट जॉब्स में जाना है, तो केमिस्ट्री फॉर मास्टर कैडर and ABS. This is another one which we are doing. So these are the latest updation on the app, latest courses which we are doing, and also there is one very special course which is super assignments for all those who are appearing in class 12, okay, boards in 2022. So this is only costing you rupees 50. उन्होंने लास्ट टाइम लास्ट मोमेंट अपनी प्रैक्टिस करनी है उनके लिए ये वाला कोर्स है. एंड द लास्ट कोर्स इज नीट 2022 के लिए एंड जेई के लिए, which are practice questions, and this is free for you, only ₹1. ये नए कोर्सेज अपलोड हुए हैं इन द मंथ ऑफ अप्रैल. फॉर दैट यू विल हैव टू डाउनलोड द ऐप. डाउनलोड ऐप करने के लिए there are no charges. It is absolutely, there's a lot of free study material also on the apps you can. Okay guys, so we're going on to chemistry for competitions, 2.3 laws of chemical combination. The first law which I am going to do today is law of conservation of.
As the name itself is suggesting, law of conservation of mass says that matter can neither be created nor lost, but it can be transformed from one form to the other. तो उसी को थोड़ा सा जब reactions करी गई, तो it was seen कि total mass of the reactants was always equal to the total mass of the products. So in a chemical reaction, total mass of reactants is equal to total mass of, ठीक है. तो इसको हम लोग जब डिफाइन करते हैं, तो इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? कैन बी डिफाइंड एज mass is neither created nor destroyed in a chemical reaction. ठीक है. So mass is neither created nor destroyed in a chemical reaction. That is the law of conservation of mass. This law was put forward by Antony Lavoisier. He is also known as the father of modern chemistry. Okay. So ये law था. अब examples अगर हम इसका लेना चाहते हैं, let's pick up a few examples. Like for example, let's illustrate the law. हम लोग water form कर रहे हैं. So hydrogen we've taken in the gaseous form, oxygen also we've taken in the gaseous form, give us water. ठीक है. Now if you're looking at the molar masses of the reactants, 2 to the 4 हो गया, 4 grams, और ये oxygen का हो गया. So oxygen का कितना होता है? कितना होगा? 32 grams. Total comes to how much? 36 grams. तो अगर 36 grams reactants है, तो according to the law 36 grams ही products होने. तो प्रोडक्ट्स हमारे पास ये कितने हो गए? वाटर का मोलर मास इज 18, 2 into 18 which is equal to 30. So this is in accordance with the law of conservation of. We can pick up another example over here. So I'll do the question with you. Let me just take an example. Like for example, अगर हम लोगों ने कैल्शियम कार्बोनेट लिया है और इसको हम हीट करते हैं, तो हीट करने पे हमारे पास आ जाता है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड. Now the law says that total mass of the reactants is equal to the total mass of the products. ठीक है. मोलर मास अगर आप कैल्शियम कार्बोनेट का निकालते हो, तो that will come to 100 ग्राम. पता है ना मोलर मास कैसे निकालते हैं? 40 plus 12 plus 3 into 16 is 100 grams. Total जब हम करेंगे इसको, it comes to 100. अब this is equal to 56 grams and this is equal to 44. देखो क्या reactants का total is equal to the total of the products. तो आप इसको total करोगे, it comes to 100 grams. So this sample again is in accordance with the law of conservation. अब let's see कि हमको इस section में से questions कैसे आते हैं. Right? तो जब हम लोग इस पे question कर रहे हैं, I have taken one question over here so as to tell you कि इसमें से questions हमें कैसे आ सकते हैं. A sample of magnesium carbonate is 50% pure. If on heating 4 grams of magnesium oxide and 4.4 grams of carbon dioxide are formed, calculate the amount of MgC. So first step is to write down the equation. MgCO3 वो बोल रहे हैं उसको हम हीट कर रहे हैं. प्लीज रिमेंबर रिएक्शन जो है आपकी टोटली बैलेंस्ड होनी चाहिए और ये लॉ बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस को भी सपोर्ट कर. ठीक है. So MgCO3 that is going to give us MgO plus carbon dioxide. Let's calculate. So first step is to write the reaction. Second step is to calculate the molar masses. So हम लोग MgCO3 का molar mass calculate करते हैं. It comes to 84 grams. I am assuming कि आपको molar masses calculate करने आते हैं. This is 40 grams and this is 44. ठीक है. क्लियर हो गया. मोलर मासेस हमने निकाल लिए. अब क्वेश्चन क्या बोलता है? If on heating 4.0 grams of this and 4.4 grams of this, that is given out.
टोटल कितना हो गया बच्चे? 4.4 plus 4 it is equal to 8.4. If this is 8.4, MgCO3 कितना होना चाहिए? 0.4 grams. ठीक है, बट यहाँ पे only 50% of your MgCO3 is pure. So hence the amount taken will become equal to how much? Hence amount taken is equal to 8.4 into 100 upon 50. ऐसे निकालोगे आप MgCO3 50% of 8.4, 50% of 8.4. तो डबल अमाउंट हमने लिया है. अगर 50% ही प्योर है, we have taken double the amount. तभी हमारे पास वो 8.4 आएगा. That is why we've taken 100 upon 50. Don't get confused. 50 upon 100 क्यों नहीं था? तो अगर आप 50 upon 100 लोगे तो आपका आंसर गलत हो सकता है. तो आंसर ठीक करने के लिए, और क्योंकि यहाँ पे 50% प्योर है और हमें चाहिए कितना 8.4 ग्राम्स, का डबल ही लेंगे ना हम, isn't it? So that means this comes to around 15.8 grams. तो इतना अमाउंट ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट अगर हम लेते हैं तब हमें इतना 4 ग्राम्स ऑफ MgO और 4.4 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. ओके, very very good. Let's go on to our second law. The second law is the law of multiple. अब ये लॉ क्या बोलता है? ये लॉ बोलता है कि अगर दो एलिमेंट्स कंबाइन हो रहे हैं to make many compounds, ओके, और तो उसमें अगर हम एक एलिमेंट के मास को कांस्टेंट कर दे तो दूसरा एलिमेंट है that will bear a whole number ratio to each other in all the compounds. So let's illustrate this law. We are saying according to this law, if two elements combine to form more than two compounds, then one of the element bears a whole number ratio in each compound if the mass of other element is kept constant. ठीक है, एग्जाम्पल्स लेते हैं तो क्लियर हो जाएगा. बहुत लंबी चौड़ी डेफिनेशन, डोंट हैव टू वरी, आई एम गिविंग यू एन एग्जांपल ओवर हियर. जैसे फॉर एग्जांपल कार्बन इज फॉर्मिंग कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है, अब यहाँ पे कार्बन का एटॉमिक वेट इज 12, तो रेशियो क्या हो गई 12:16, और यहाँ पे रेशियो क्या हो गई 12:32. तो वी हैव केप्ट दिस एज कांस्टेंट. ऑक्सीजन की रेशियो क्या आ रही है बच्चे? 1:. डन. तो एक के मास को अगर हम कांस्टेंट रखें, दूसरा वाला जो है दैट विल बियर अ होल नंबर रेशियो टू ईच. लेट्स टेक अनदर एग्जांपल. आई एम टेकिंग ओवर हियर ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन. नाउ नाइट्रोजन जो है वो ऑक्सीजन के साथ 5 डिफरेंट कंपाउंड्स है. वन इज नाइट्रस ऑक्साइड, तो आप लाफिंग गैस बुलाते हो. वन इज नाइट्रिक ऑक्साइड, ठीक है. देन यू हैव NO2 nitrogen dioxide, N2O3 nitrogen trioxide, and N2O5 nitrogen pentoxide. So let's look at the mass of nitrogen. Mass of oxygen. तो एनालाइज करते हैं सारे कंपाउंड्स. यहाँ पे मास ऑफ नाइट्रोजन क्या हो गया 2 into 14 which is 28.
मास ऑफ ऑक्सीजन इज 16, ठीक है, और यहाँ पे 14 एंड 16, यहाँ पे 14 एंड 32, 28 and 15 to 16 is 48, and 28 and 5 into 16 is 8, ठीक है। अब हमको नाइट्रोजन के मास को करना है कांस्टेंट, तो हम 2 से डिवाइड कर देते हैं। मिनिमम मास ऑफ नाइट्रोजन विच वी कैन टेक इज 14, तो लेट्स डिवाइड दिस बाय 2, ये 2 से डिवाइड करके 14 आ जाएगा, वो भी फिर हमें 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, 8 आ जाएगा। यहाँ पे नथिंग इज रिक्वायर्ड, यहाँ पे नथिंग इज रिक्वायर्ड, यहाँ पे अगेन 2 से डिवाइड करके 14 आ गया, और ये आ गया 24, तो भी 14, और ये कितना आ जाएगा 40। चलो, सो अब हमने नाइट्रोजन को कर दिया है कांस्टेंट, same mass. Let's look at the ratio of oxygen which we have, that is 8:16. I'm taking 24 first, to 24 is to 32 to 40. Simplest ratio में करते हैं, 8 ones are 8, 8 twos are 16, 8 threes are 24, 8 fours are 32, and 8 fives are 40. It is as simple as that. In the oxides of nitrogen, the ratio of oxygen is 1:2, 4:5. Let's apply this to a question. Methane and ethane are both constituents of natural gas. Sample of methane contains 11.40 grams of carbon and 3.80 grams of hydrogen, whereas a sample of ethane contains 4.47 grams of carbon and 1.118 grams of hydrogen. Show that the two substances obey the law of multiple proportions. चलो बहुत ही easy है, इसमें हमने ratios लेनी है. So let's look at the C:H की ratio in each of the compound. पहले हम लोग mass ratio ले रहे हैं for the first compound. Carbon is 11.40 upon 3.80 is hydrogen. This comes to 3.00. ठीक, और सेकेंड की भी हम रेशियो ले लेते हैं इन केस ऑफ इथेन, ये हमने मीथेन की ली है अकॉर्डिंग टू द डाटा व्हिच इज गिवन टू अस इन द क्वेश्चन। देन लेट्स गो ऑन टू इथेन, इथेन की भी हम CH रेशियो ले लेते हैं, इट कम्स टू 4.47 divided by 1.118, this comes to approximately 4.00. तो मीथेन में कितनी आ रही है 3.00, इथेन में आ रही है 4.00। तो दोनों की जब आप रेशियो लेते हो, 2CH ratios, they are clearly small whole number multiples of each other. तो रेशियो आपके पास क्या आ गई, इस तरह से आप शॉर्टकट में इस क्वेश्चन को कर सकते हो। इन मीथेन upon C:H mass ratio in each. क्या आपकी होल नंबर रेशियो आ रही है C:4, it is coming as whole number ratio, so whole number multiples of each other, so this is in accordance with the law of multiple proportions. Let's go on to the next law guys. हमारा next law है law of definite proportion. लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस क्या बोलता है कि सपोज आपने वाटर लिया है, ठीक है, अब वाटर के सोर्सेज आपके पास अलग अलग हो सकते हैं। वाटर हमें टैप से मिल सकता है, वाटर हमें रिवर से मिल सकता है, वाटर हमें लेट्स से कहाँ से मिल सकता है, सी से मिल सकता है, बट वी आर लुकिंग एट प्योर वाटर एवरीवेयर विदाउट इम्प्योरिटी, ओके, एंड दीज आर डिफरेंट सोर्सेज ऑफ वाटर। जहां से भी हमें वाटर मिले, द रेशियो ऑफ हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन बाय मास, दैट इज ऑलवेज द सेम। तो बाय मास आपके पास कितना आ गया 2:3, which is equal to 1:8, and by volume it is 2:1, right? Same is the case with carbon dioxide. So whatever the source of carbon dioxide may be, for example, if we are taking carbon dioxide, let's say we can get it from plants, we can get it from animals,
we can get it as solution. तो कहीं से भी हमें मिलेगा बाय मास, अगर हम रेशो इसकी देखें, दैट इज गोइंग टू बी, कार्बन का मास कितना होता है 12, 12 is to 2 into 16 is 32, ठीक है जी. So this is going to be 4 3s are 12, 3 is to 8. तो कहीं से भी हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, कार्बन ऑक्सीजन का रेशो है दैट इज ऑलवेज गोइंग टू बी 3. और बाय वॉल्यूम अगर हम करें, बाय वॉल्यूम कितना हो गया 1 is. Simple. This is your law of definite proportions. Different samples of pure chemical substances always contain the same proportion of elements by mass. Okay, this is how you're going to define it. So if you want to note down the definition, guys, is different samples of a pure chemical substance always contain the same proportion of elements. Same proportion of elements by. Okay, I hope it is clear. Let's see, do we have a question from this? Yes. So our question is, write the formula in each case. If H and O are in the ratio 1 is to 65 mass. So let's see इसको हम कैसे करेंगे. तो हमारे पास फर्स्ट वाले में H is to O की रेशो हमें कितनी दी हुई है 1 is to 6. ठीक है. सो अगर बाय मास हम कर रहे हैं दैट इज 1 is to 6. और अगर बाय मोल्स करेंगे तो 1 is to 1 आ गया ना, 1 is to 1 by मोल. तो कंपाउंड अपेयर्स HO, दोनों की रेशो सेम है, पर HO कोई कंपाउंड नहीं होता है, तो हम इसमें क्या कर रहे हैं, वी आर मल्टीप्लाइंग इट विथ 2 H2O2, so the compound that is हाइड्रोजन peroxide. इजी है, वेरी गुड. नेक्स्ट करने की कोशिश करो. Going on to the next one, guys. If S and O are in the ratio 1 is to 1, इसी तरह से करना है. SO की by mass ratio अगर आप देखोगे, it is going to be sulfur is 32 is to 16. ठीक है. So by mass अगर आप इसको देखते हो, then it is going to be by mole कितना आएगा. Let's do it by mass first. 1 is to 1 by mass उन्होंने आपको क्वेश्चन में दे रखा है. So by mass it is 1 is to 1. By mole कितना हो गया 1 upon, what is the atomic mass of sulfur 32 is to 1 upon 16, which makes it equal to 1 is to 2 by mole. So what is going to be the formula? Sulfur dioxide. ठीक है. Next question देखो. If sulfur and oxygen are in the ratio 1 is to 1.5 by mass आ गया अब ये. तो इसी तरह से करना है आपने. ओ स्लाइड खत्म हो गई मेरे पास. So I'm just rubbing it guys for you. कॉपी कर लिया ना आपने? All right. So I'm going on to C part. If S and O are in the ratio 1 is to 1.5. So let's derive it again. S is to O, 1 is to 1.5 by mass दे रखा है क्वेश्चन में, तो वैसे ही करोगे 1 upon 32 is to 1.5 upon 16. So this is by mole. क्या आ गई रेशो? Ratio will come to 1 is to 3. So what is the formula? Sulfur dioxide.
Okay guys, so these are laws of chemical combination. Next video आपके लिए upload होगी Gay-Lussac's law और Avogadro's law के ऊपर, and we will also do Dalton's atomic theory in our next topic. ठीक है, so you stay tuned. Question practice में साथ साथ कर रही हूँ. I am planning to do one question of every type so that you know how to apply the formula. Okay, so if you like the video, like button को press कर दो, अपने friends के साथ share कर लो. That will make me very happy in the next class.